Hello everyone, a warm good evening to you all. So let's wait for 1 or 2 more minutes so that others can join. बहुत ही कम turnout हुआ है. Let's wait just 2 minutes. उसके बाद we'll start the class. Okay. Meanwhile, if you want to ask anything related to the subject, you can keep asking me. I'll answer. Yes, sorry, मैं थोड़ा आपका पीपीटी ही देख रही थी. And I got completely carried away. Yes. So, Tutu, क्या notes? I didn't get you here. I'm sorry. So, कुछ बच्चे तो join हुए हैं. Let's start. Others will join slowly. हॉर्टिकल्चर में पीडीएफ तो प्रोवाइड कर रही हूँ ऑलरेडी. Already I am providing the PDF. Yes. एक बार आप सौरभ सर से पूछ लीजिए. आई डोंट नो. मैं डेली नोट्स प्रोवाइड कर रही, मतलब वॉट एवर द जो पीपीटी है उसी का पीडीएफ में प्रोवाइड कर रही हूँ बिफोर द क्लास इटसेल्फ. ओके. यस. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. ऑलरेडी लेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस नो. थोड़ा सा गॉट कैरिड अवे विद द कंटेंट. कहाँ पे है? Where is the PPT? Just give me a second.
यस, अभी आया है। यस, सो होप एवरीथिंग इज क्लियर, दिख रहा है आपको? मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ओके, this is what we were doing, plantation and horticulture. And yesterday we have seen definition of horticulture, scope, importance, classification of horticulture plants. Now we are doing classification of fruits and vegetables. Okay, fruits में हमने कई सारे classification किए. Now we are going on with the morphology of the fruits. ठीक है, उसमें already हमने कुछ किया है and today we'll be winding up, वो पूरा complete कर देंगे आज. उसके बाद I'll start with the fundamental principles of plant propagation. Plant propagation का कर लेंगे. उसके बाद विल मूव इनटू विच वन विल डू सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड प्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स, मतलब ऑर्चर्ड वाला जो मेजर है वो स्टार्ट करेंगे. मतलब लगेगा 2 दिन तो हमारा पूरा इसी में जाने वाला है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर डूइंग येस्टरडे. वी हैव डन सिंपल फ्रूट्स, फ्लैश देख लिया हमने. टुडे विल बी डूइंग द ड्राई फ्रूट्स. ओके, ड्राई वाले सिंपल, ड्राई सिंपल फ्रूट्स में आपको 3 तरह के आते हैं, डेहिसेंट, इनडेहिसेंट एंड शाइजोकार्पिक. ओके, डेहिसेंट कंप्लीटली वो अपने सीड डिस्पर्सल खुद मैकेनिज्म रहता है उनका. इनडेहिसेंट में उनका मैकेनिज्म नहीं रहता, कुछ और स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म रहता है. शाइजोकार्पिक ये एक्चुअली दोनों के बीच में पड़ता है. सो इन फ्यू लिटरेचर यू कैन फाइंड दैट शाइजोकार्पिक है ही नहीं. दे से दैट शाइजोकार्पिक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनडेहिसेंट एक्चुअली. कुछ लिटरेचर में इसको बिल्कुल थर्ड कैटेगरी में ही डाला गया है. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन ईदर ऑफ द केसेस. हमारा मतलब है कंटेंट से. ओके, so here comes the dry fruits, dehiscent fruits, which are also called as capsular fruits. ये simple fruits हैं. Now here when we talk about this, as you can see, these are all various kinds of dry dehiscent fruits. एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ. Here their pericarp, हमने already एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, वो सारे पेरिकार्प में आते हैं. So all that we have already done yesterday itself. So their pericarp rupture after ripening and the seeds are disseminated, as you can see here. ये seeds disseminate हो रहे हैं in different methods. Based on that they have been given various names. A fruit developed from a single carpel may split only from one side at maturity to discharge its seeds. Such a fruit is called as follicle. ये follicle है. यहाँ डेल्फिनियम का फोटो दिया है, ये भी डेल्फिनियम, ये सही से नहीं है इसलिए मैंने फिर ये ढूंढ के डाला है फोटोग्राफ. ठीक है, मिल्कवीड, मैग्नोलिया, ये सब इसी में आते हैं. मतलब अपने आप से वो एक तरफ से रप्चर होके पूरे सीड्स बाहर डिस्पर्स हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है द स्प्लिटिंग ऑफ द ओवरी अकर्स अलोंग 2 सीम्स, दोनों तरफ से. मतलब जैसे कि हमारा लेग्यूम, जैसे पी है या फिर पीनट है, हम लोग उसे प्रेस करते दोनों तरफ से वो ओपन कर सकते हैं ना. सो सेम, सॉरी, with the seeds born to only one half of the split ovary, एक ही तरफ वो अटैच रहते हैं. now such a fruit is called legume. पी, बीन, पीनट ये सब इसी में आते हैं. this is the photograph. ठीक है, next, in a third type of dehiscent fruit called siliqua or silicil, seeds are attached to central structure. This occurs in radish and mustard, as you can see here. ये दोनों ओवरी के जो पार्ट्स है वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं एंड जो बीच में एक स्ट्रक्चर है उसमें सीड्स है. ओके, नाउ ये मस्टर्ड में आप बहुत कॉन्स्पिक्यूअसली इसे देख सकते हैं. नाउ सिलिक और सिलिक plural is a siliquous and siliquae is a type of fruit having 2 fused carpels with the length being more than 3 times the width. क्योंकि यहाँ पे हमने दिया है सिलिक और सिलिसिल, दोनों का मीनिंग अलग अलग है. How here? See, siliqua जो है that is the length is very long. Siliqua this, ये सिलिक्वा का है. Okay, now silicil or silicula का here the length is less than 3 times the width of the dried fruit. दोनों में इतना ही फर्क है. Based on that the name has been given. ठीक है, ये आपने दोनों ही देख लिया, सिलिक्वा एंड दिस इज सिलिक्यूला. ज्यादा फर्क नहीं है बट स्टिल द मोस्ट कॉमन dehiscent सिंपल फ्रूट्स आर डिस्चार्ज्ड व्हेन द कैप्सूल स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडनली. वो हमने देखा है हर जगह पे ये लॉन्गिट्यूडनली ही स्प्लिट हो रही है टू रिलीज द what you'll say the seeds, right? But there are few where horizontally भी होता है. Okay, so here in others the seeds exit through holes near the top of the capsule. For example, on the basis of dehiscence, capsules can be of different types. Like ये poppy का है, porocidal बोलते हैं इसको, porocidal type of capsule. Now here the dehiscence occurs through pores, जो poppy seeds.
पेपावर सोमनिफेरम जो आता है, उसका ऊपर देखिए ये सारे होल्स है, होल्स टाइप पोर्स यू कैन से, फ्रॉम हियर द सीड्स आर डिस्चार्ज्ड। ओके, एंड इसी का जो दिस पेपावर सोमनिफेरम और पॉपी, इसी से हमें वो एक लैटेक्स मिलता है, ओके, विच इज एक्चुअली ओपियोइड इन नेचर, ओपियम जो बोलते हैं। सो हियर स्मॉल ब्लेड होता है, उससे दे कट ऑन टू दिस, इसमें हल्के से कट्स डालते हैं, फ्रॉम दैट लैटेक्स विल बी ओजिंग, देन जनरली इवनिंग टाइम पे कट्स मार के चले जाते हैं, एंड बाय मॉर्निंग ऑल दैट विल बी कलेक्टेड, okay, and then they will scrape off that latex and that can be used in especially pharma में बहुत use होता है, and since it is opioid in nature, ये crop लेने के लिए the farmers have to get permission, and then वो सब ना बहुत सारे पेपर वर्क होता है, then they can do that. नेक्स्ट, वो कुकिंग में भी पॉपी सीड्स बहुत यूज होते हैं, साउथ में तो बहुत ज्यादा पॉपी सीड्स, कुकिंग मसाले जो गरम मसाला होता है ना, in that they use this a lot. Pyxis, the dehiscence is transverse, as you can see, ये pyxis कहाँ पे है, सेलोशिया यहाँ पे नहीं है क्या फोटो, कुछ जो मिले हैं मैंने डाल दिया है एक्चुअली यहाँ पे, ये दिस इज pyxis only, okay, and the dehiscence is transferred so that the top comes off as a lid, as if exposing a box of seeds, जैसे कि coxcomb, amaranthus, shaftweed, amaranthus तो कॉमन यहाँ, आई मीन कुछ एरियाज में, जैसे आंध्रा में ये amaranthus बहुत हाईली कल्टिवेटेड है, देन इन महाराष्ट्र ऑल्सो, यहाँ पे भी, even in UP also I have seen northern plains. It's and as a leafy vegetable also it is used, and also the seeds are used, which are considered as very nutritious. ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉक्यूलिसिडल, द डेहिसेंस अकर्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिट्स व्हिच ओपन इनटू लॉक्यूल्स। सो अभी जो हमने कल देखा था, जो कार्पेल्स, मतलब ये एक कार्पेल है that is fusing with other carpels. Now this particular structure, that single carpel carrying the seeds etc, this is called as locule. Now here loculicidal, each locule will be separated, matlab this would open up, okay, separately, and the seeds are released, as you can see here, okay, that is abel moscus etc, you can see in that. Septicidal, the dehiscence line appears along the septa, that is here it will cut itself, okay, so it, as you can see here, septicidal yahan pe, as you can see here, so here the seeds would be in this, and this entire structure would be cut like this from here and dispersed. Centifragal, tin broken parts separate, exposing the seeds attached to the central axis. ये भी उसी तरह से है almost, but the thing is the central axis जो भी इसके बीच में है, the seeds would be attached to this only, exposed, and this will be cut, that is it will have ruptures on that, really showing up the seeds separately. So these are some of the, आपको majorly याद रखना है the examples of each of these type of fruits, okay, and उसका मीनिंग, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, ये हो गया डेहिसेंट। नाउ इंडेहिसेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकीनियल फ्रूट्स बोलते हैं इनको ना, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें अगेन कुछ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है, टाइप्स ऑफ इंडेहिसेंट फ्रूट्स, वो और उसके एग्जाम्पल्स वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। As the name indicates, the pericarp of such fruits does not rupture on ripening and the seeds remain inside. Okay. Some indehiscent fruits, they may have hard pericarp, exocarp, mesocarp plus endocarp बिल्कुल hard हो जाते हैं. The stony fruit wall is cracked in order to reach the seeds. Such seeds are called nuts. Very important. And this, for example, chestnut, hazelnut, etc. In this, the pericarp is harder and leathery or woody. Okay, so इसका example है like your quercus, oak tree का fruit, lychee, cashew nut, trapa, etc. In case of lychee, the pericarp is hard and leathery, and the edible part that we eat, actually it is the eril, which is an outgrowth of the testa from the micropylar end. That is, the seed का कई सारे parts होते हैं, one of that is the testa. From that, okay, टेस्टा में भी अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, एंड्स होते हैं, ओके, उसके माइक्रोपाइलर एंड से द एक्सटर्नल ग्रोथ इट विल कम, लाइक योर मेस, नटमेग में भी
आपका नटमेग अंदर रहता है, उसके ऊपर एक डार्क रेड कलर का एक स्ट्रक्चर आता है, बिल्कुल एक नेट की तरह. दैट ऑल्सो इज एरिल ओनली, विच इज अगेन एडिबल. ओके, इन दिस ऑल्सो, लीची ऑल्सो, द एडिबल पार्ट इज एरिल, दैट इज ग्रो नॉट ओवरी और समथिंग. ओके, जैसे एडिबल पार्ट इन कोकोनट इज एंडोस्पर्म, राइट. सो उसी तरह से इसमें एडिबल पार्ट एरिल है. नेक्स्ट आता है हमारा इंडेhiscent फ्रूट्स में ही सिप्सेला. नाउ इट फॉर्म्स फ्रॉम ए बाइकार्पेलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी, दैट इज टू कार्पेल्स होते हैं सिंकार्पस विच आर फ्यूज इंफीरियर. सी, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द ओवरी इन द थैलेमस और द हेस्पेरेडियम और द रिसेप्टिकल, टाइप्स ऑफ ओवरीज होते हैं. इंफीरियर ओवरी मतलब इट इज बिलो द रिसेप्टिकल, सुपीरियर ओवरी अबव द रिसेप्टिकल, उस तरह से. सो हैविंग ए सिंगल बेसल ओव्यूल, एक ही ओव्यूल रहता है, ठीक है. द फ्रूट हैज क्राउन ऑफ हेयर लाइक प्रोसेसेस विच इज नोन एज पेपर्स. एंड सी, हमने ये देखा डेहिसेंट फ्रूट्स में वो अपने आप से फट मीन दे ओपन फट जाते हैं, एंड देन सीड्स आर रिलीज विथ फोर्स. ओके, or they'll open like that and slowly because of wind or the animals that are moving, उनके फर में लग जाता है, उस तरह से होके डिस्पर्सल हो जाता है. नाउ इंडेhiscent फ्रूट्स में किस तरह से होगा, फिर उनके लिए कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए ना. वन ऑफ द मैकेनिज्म, लीची में क्या है, अच्छा सा कलर है, सो देख के उस तरह से एडिबल एनिमल्स आल्सो दे ईट इट एंड थ्रो द सीड्स हियर एंड देयर. किसी में उस तरह का नहीं होता है. सो इन दैट केस यहाँ सिप्सेला फ्रूट है, एंड यहाँ पे इट विल हैव पैपर्स, मतलब टफ्ट ऑफ हेयर. मैं फोटो दिखाती हूँ, सिप्सेला दिस वन. सो ये टफ्ट ऑफ हेयर की वजह से दिस विल बी कैरिड अलोंग द विंड, सो उसकी वजह से दैट विल बी रिलीज. जैसे डैंडेलियन, डैंडेलियन के सीड्स देखेंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट द tuft of hair carries them from one place to another. Now, where the pericarp is not winged, but the single seed is attached to the pericarp only at its base, such fruits are called as achenes. They are generally small, one-seeded fruit. Pericarp is free from the seed coat, and typically this kind of fruit you can see in the sunflower family as Astraceae. अकीन फ्रूट, स्पेशली अकीन जो फ्रूट बोलते हैं, दैट अकीन टाइप ऑफ फ्रूट आई शुड से, which is again an indehiscent type of fruit that you can find especially in the sunflower family, and these are the most common indehiscent fruits. Okay, achenes. And cereals में जो fruit होता है, that is called as caryopsis or the grain. Here the seed is completely, as you can see here, unlike akene, the seed, unlike in akene, is fully fused to the pericarp. Okay, and as you can see here, the fruit is called as caryopsis or a grain, and the inflorescence is composed of numerous spikelets. इसमें inflorescence में seeds बनते हैं, each spikelet bearing a single rice grain. An empty spikelet with the lemma and palea slightly separated from each other. As you can see here, एक अंदर seed है. Now here this is the lemma and palea, and inside at one point here you can find this is a seed, this is the embryo, and beneath the pericarp itself a thin layer of endosperm you can find. And in every seed you will find the endosperm, because it has to, something has to nourish the developing embryo. Okay, so for which this endosperm would be there. ओके, दैट्स द रीजन जो पॉलिश्ड राइस बोलते हैं उसमें ये एंडोस्पर्म एवरीथिंग इज रिमूव. दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ना उसमें बिल्कुल इट्स नॉट एट ऑल न्यूट्रिशियस, इट्स ओनली स्टार्ची इन नेचर करके. दैट इज बिकॉज वी से दैट. ओके, सो ये पेडिसिल है जो सेपल है, दैट इज डेवलप्ड इनटू ग्लूम, एंड पेटल्स एक्चुअली दे डेवलप इनटू दिस लेम्मा एंड पेलिया, कवरिंग दैट, एनक्लोजिंग दैट ग्रेन एक्चुअली और द कैरियोप्सिस कंप्लीटली. ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेhiscent. शाइजोकार्पिक स्प्लिटिंग फ्रूट्स दे आर आल्सो कॉल्ड as I've said earlier also, these fruits fall in the above mentioned, between the above mentioned two categories, that is the dehiscent fruits and the indehiscent fruits. One second, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट wherever मैं हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज focus on that. And I think that you have already gone through this as part of your BSc Agri or Horticulture. Now here, the fruit on ripening divides into one-seeded segments or mericarp. That is, mericarp is nothing but a carpel with one seed. जैसे कि ये
मतलब ये पूरा पूरा इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, मतलब सीड अंदर रहेगा एंड दिस वुड पार्टीशन लाइक दिस एंड दिस वुड बी डिस्पर्स्ड एंड क्या होगा, वेन एवर इट रीचेस द ग्राउंड स्लोली ये जो ऊपर का पूरा कोटिंग है ये पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, रिवीलिंग द सीड एंड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एम्बिएंट कंडीशंस इट विल जर्मिनेट. ओके, सो ये बट द मेरिकार्प रिमेन्स अनरप्चर्ड, ये रप्चर नहीं होगा, सॉरी ये रप्चर नहीं होगा, इट विल बी रिलीज, दिस इज कॉल्ड एज मेरिकार्प, द सिंगल स्ट्रक्चर कैरिंग द सीड इट्स कॉल्ड एज मेरिकार्प. ये बिल्कुल रप्चर नहीं होगा, द होल along with that seed it will be released. Okay, sometimes the pericarp of the fruit is thin. Okay, and the ovaries occur in pairs which you can find in dill and carrot. Now this type of fruit is called as schizocarp. Okay, next in maple, that acer species, ash, fraxinus species, elm, ulmus species and other species, the pericarp has a wing and is called the samara. ओके ये जो है सॉरी ये जो है ये समारा ऑफ एप्पल ये है. नाउ दिस विंग्स जो है दिस विल हेल्प देम टू बी कैरिड अलोंग विद द विंड, देयर बाय जो इसमें मेरे कार्प में जो सीड्स है दैट वंस दे रीच द व्हाट यू विल से एम्बिएंट conditions, no, or surroundings, there they will germinate. ठीक है, see the samara is a peculiar one seeded fruit which is similar to akin but with wings. Some botanists refer to the maple fruit as a schizocarp because it splits into two indehiscent seed bearing sections. So ये यहाँ पे ऐसे break होके this will be one and this will be one. Hence this is considered as, क्योंकि ये seed बाहर नहीं आ रहा है, it is inside only, hence this is considered as मेरिकार्प and this is put under schizocarp. But few literature you can find कि this is put under dehiscent fruits. Okay, in mimosidae, that is fruit is lomentum. Lomentum develops like legumes. Lomentum का best example tamarind. Okay, tamarind, cassia, desmodium, etc. Tamarind तो हम देखते हैं इसलिए मैं उसका example ले रही हूँ. Here fruits are constricted or divided into one seeded mericarp. After maturity, these are separated with from each other. Okay, इसका ये लोमेंटम भी यहाँ पे मैंने दिया है क्या? अच्छा लोमेंटम का फ्रूट 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं है. ओके ठीक है, ये माइमोसिडे में लोमेंटम काइंड ऑफ फ्रूट यू विल फाइंड एंड जिसको शाइजोकार बोलते हैं अकीन टाइप समारा हमने देख लिया है. ओके ठीक है, शाइजोकार्प ये हमने देख लिया. दीज आर द सम ऑफ एग्जांपल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके एंड यहाँ पे आपने मेरिकार्प देखा है. नाउ द वन द स्टॉक दैट इज नो जो भी टू विच द मेरिकार्प इज अटैच्ड इट्स कॉल्ड एज कैरियोफोर. ये एक टॉपिक है. सो वी हैव डन फ्रूट्स. सिंपल में हमने फ्लेश भी कर लिया है, ड्राई फ्रूट्स भी कर लिया. ड्राई में फ्लेश में हमने ड्रूप, पोम, बेरी. बेरी में फिर अगेन डिफरेंट टाइप्स हमने किया है, स्पेरिडियम और कई सारे हमने किए हैं, पेपो और क्या किया था हमने, बलिस्टा और बैलुस्टा और भी किया था हमने उसमें. सो दैट ऑल वी हैव डन. ड्राई में हमने डेसेंट, इंडेसेंट, शाइजोकार्पिक तीनों ही कर लिया है. नाउ आता है टू टाइप्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मल्टीपल और कॉम्पोजिट फ्रूट्स. ठीक है, दोनों में फर्क क्या है मेजरली. व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीगेट फ्रूट्स दे डेवलप फ्रॉम द अपोकार्पस ओवरीज ऑफ सिंगल फ्लावर. सो हियर फ्रॉम वन फ्लावर मेनी फ्रूट्स डेवलप, मतलब ओवरीज बहुत सारे होंगे दैट डेवलप इनटू फ्रूट और दिस इज कॉल्ड एज इटेरियो ऑफ बेरीज. ओके, सो मतलब बंच ऑफ बेरीज लाइक स्ट्रॉबेरी है. स्ट्रॉबेरी में ये छोटे छोटे जो फ्रूट्स ना, छोटे छोटे आप जो एक एक सीड देख रहे हो, दिस इज फॉर्म फ्रॉम वन 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 ओवरी ईच. दे ऑल फ्यूज्ड टुगेदर. एक्चुअली ये पूरा एक ही फ्लावर का है. इन दैट it has developed. Similar is the case with custard apple. So this kind of fruits are called aggregate fruits. ये single flower से बनते हैं, single flower. वही multiple और composite fruits में entire inflorescence develops into the fruit.
लाइक देखिए यहाँ डिफरेंट ये इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें कई सारे फ्लावर्स है एंड ईच फ्लावर का जो कार्पेल है, फ्रॉम दैट दिस ईच सेगमेंट डेवलप्स. सो हियर a fruit developing from a complete inflorescence is called multiple or a composite fruit, that is many flowers single fruit. Here one flower many fruits bunch की तरह, but they will be so aggregately packed and developed कि हमें एक ही फ्रूट लगता है वो, ठीक है. And here example in this multiple or composite fruit, fig, jackfruit, pineapple, mulberry etc. Very very important, कई बार examples पूछ के confuse कर देते हैं बिकॉज दोनों भी टर्म्स से थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. सो यहाँ तक हम लोग क्लोज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक पार्ट, मतलब जो कमर्शियली यूज किया जाता है. ट्यूबर्स, दिस इज थिकेंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम और राइजोम. Okay, it serves as a food reserve and then helps in vegetative propagation as well, like yam, jerusalem. एक्चुअली जिंजर स्टेम का ही है इसलिए ट्यूबर्स कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्पेशलाइज्ड होता है राइजोम. ओके, पोटैटो यू कैन पुट अंडर दिस. बल्ब्स, नाउ बल्ब इज ए मॉडिफाइड स्टेम एंड यस वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो ट्यूबर्स बनते हैं दैट स्टेम एक्चुअली उसका स्टेम का ही एक पार्ट होता है कॉल्ड एज स्टोलन. ओके, नाउ दिस विल बल्ज and that is by storing the food and that develops into tubers. एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, which part of stem develops into tubers in potato, actually it is stolons बोलते हैं उनको. Now bulb, it is a modified stem consist of relatively large, usually globe shaped underground bud with membranous or fleshy overlapping leaves arising from a short stem. So यहाँ पे ये है, ये सारे roots हैं. ओके, सो यहाँ पे जो स्टेम है दैट विल बी कंप्लीटली कंडेंस, जैसे इतना बड़ा स्टेम है विथ लॉट्स ऑफ इंटरनोड्स, वो पूरा कंडेंस हो गया है एंड फ्रॉम ईच नोड एक लीफ आता है, सो दैट ऑल लीव्स वुड बी फ्लेशी, मतलब जो लीफ शीथ होता है ये पूरा लीफ शीथ है. ओके, एंड उसके बाद लीव्स, जो मेजर लीव्स आपको दिखते हैं, ठीक है, ये लीफ शीथ में ही ये फूड स्टोरेज होती है. अनियन, गार्लिक, काइव्स, शैलेट्स ये इसमें आते हैं. स्टेम्स, जो stems is the economic part here, asparagus, celery, bamboo shoot, fennel etc. Leaves as economic part like your spinach, coriander, mustard, lettuce etc. Roots are the economic part here, carrot, beetroot, sweet potato etc. So here in this case, though because of this specific nature, though these are tubers में हो या फिर किसी में भी, ये सभी में मेजरली ट्यूबर्स, बल्ब्स, रूट्स, इन सब में मेजरली majority of the times, though ontogenically they may be biennial, perennial, anything, but they are generally grown commercially as annuals only, because first year में generally वो storage होता है, second year में they use that stored food for flowering. So that's not our concern, हमारे तो economic part वही है root. Okay, so for that they harvest it. Flowers like your cauliflower, broccoli, artichoke etc. Fruits, a vegetable with a pulpy seed rich body which grows shrub or vine. Technically these are fruits but are used as vegetables. कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, टोमेटो, एग प्लांट, कुकुम्बर, अवोकाडो, एक्चुअली ये सारे भी टेक्निकली फ्रूट्स ही माने जाते हैं. ओके, पेपो जो एग प्लांट है, sorry cucumber है, but still we use it as vegetable. Okay, so seeds, like seeds are used as vegetable economic part in vegetables, corn, lentil seeds, beans, green peas, broad beans, all these fall under this. Again, classification based on the season, like winter season crops, mild winter crops, summer season crops, rainy season crops, all examples provided here. मैं एक बार बस पढ़ के सुनाती हूँ क्योंकि दिस आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ओनली. पीडीएफ में एनीवेज प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज उसमें से देख लीजिए एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कम बैक टू मी, क्योंकि बहुत बेसिक है. व्हाई नो वेस्टिंग टाइम अगेन एक्सप्लेनिंग, बहुत बेसिक है. Classification of vegetables based on method of raising, how they are raised. Direct sown crops directly, seeds can be sown directly here. Transplanted, these here we have to maintain a nursery. After that the transplantation should be done. When हम लोग ऑर्चर्ड मैनेजमेंट का करेंगे ना, उसी टाइम पे हम लोग नर्सरी मैनेजमेंट का भी करेंगे. उसमें हम लोग देखेंगे कि नर्सरी, हाउ टू रेज दैट नर्सरी, ट्रांसप्लांटेशन मेथड्स एंड ऑल दैट. वाइन्स एंड कटिंग्स, जो सॉफ्ट वुड स्टेम कटिंग्स जो होते हैं ना, वो इसमें आते हैं.
बिट्स ऑफ ट्यूबर्स एंड कॉम्स। जनरली जो ट्यूबर्स होते हैं, कॉम्स होते हैं, दे आर नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम इटसेल्फ। ओके, बिकॉज ऑफ विच उसमें से जो बड्स होते हैं दैट डेवलप। ओके, सो दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज ए न्यू वेजिटेटिव पार्ट। अभी वेजिटेटिव पार्ट्स का जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, देर आई विल गो थ्रू दैट कि ट्यूबर से किस तरह से वो होता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन फोटो पीरियड, ये हमने डिस्कस किया था कल, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट, ये एग्जांपल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन हार्डीनेस। ओके, हार्डी वेजिटेबल का बहुत मतलब कितने हाउ दे आर नो दे कैन सर्वाइव कुछ नो कुछ कंडीशंस जिसमें नो कभी सैलिनिटी हो सकती है या फिर सही से शैलो सॉइल्स हो सकते हैं, उस तरह से उसमें भी दे विल बी एबल टू सर्वाइव। हार्ड एंड ऑल्सो स्टोरेज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत आराम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, दे हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ एज वेल। सेमी हार्डी वेजिटेबल्स एंड टेंडर वेजिटेबल्स एंड एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दे दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे फ्रूट्स का है, सिमिलरली इज द केस विथ वेजिटेबल। सो हायर द रेस्पिरेशन, लोअर विल बी द शेल्फ लाइफ, राइट, जो हमने कल डिस्कस किया था। सो लोअर द रेस्पिरेशन, हायर विल बी द हायर विल बी द शेल्फ लाइफ। सो यहाँ पे जितने भी लो वाले होंगे रेस्पिरेशन, इट मीन्स देर शेल्फ लाइफ इज हाई। अनियन कितने दिन भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, गांव में तो विलेजेस में ईयर मतलब पूरे साल के लिए दे स्टोर अनियन, गार्लिक एक्सेट्रा। जस्ट उनको जो ड्राइड लीव्स होते हैं उनको टाई करके दे जस्ट हैंग इट नियर देयर रूफ्स, वो तो आराम से यूज कर सकते हैं। पोटैटो, पम्पकिन, ऐश गोर्ड तो कितने मतलब मैंने एक बार रखा था ऑलमोस्ट 1 मंथ, ऐसे कुछ बिल्कुल खराब नहीं, जैसा है वैसा ही था। तो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नाउ क्लासिफिक और क्या था, अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन सॉइल रिएक्शन, पीएच, स्लाइटली टॉलरेंट, मॉडरेटली टॉलरेंट, हाईली टॉलरेंट। सो लो पीएच से लेके हाई पीएच से किस तरह से, वो देख लिया हमने। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स बेस्ड ऑन रूटिंग डेप्थ, शैलो रूटेड क्रॉप्स मतलब इनका जो रूट्स है वो दैट वोंट गो बियॉन्ड 30 to 40 सेंटीमीटर्स, moderately deep rooted 50 to 60 centimeters, deep rooted 80 to 100 centimeters and above. Why should we know about this no rooting depth, क्यों important है हमारे लिए? Because क्योंकि if we know the proper rooting depth of the crops that we are going to grow accordingly, टिलेज ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ वी डोंट, द डीप रूटेड क्रॉप है, हम नॉर्मल इक्विपमेंट जैसे कंट्री प्लाउ से ही हमने किया है प्लाविंग एंड देन वी हैव सोन द सीड्स। सो व्हाट विल हैपन, जो नीचे जो हार्ड स्ट्रक्चर है दैट विल नॉट अलाउ दीज रूट्स टू पेनिट्रेट इनटू डीपर पार्ट्स, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ विल बी स्टंटेड। सो ऑलवेज understanding the rooting depth will help the farmer to understand the kind of tillage implement that can be used for plowing। जैसे deep rooted है, उसके लिए कुछ सबसॉइलर या फिर chisel plow टाइप का यूज करना पड़ेगा along with the regular plow, thereby they'll be able to grow properly। Okay, classification of vegetable crops based on water requirement, high water requirement, moderate, low, very low। Watermelon, muskmelon, pumpkin, one of the highest water bearing fruits, but again they require very less water for their growth and generally dry areas में ही ये grow होते हैं। Classification of vegetable crops based on soil salinity, less tolerant to soil salinity, moderately they are tolerant, highly tolerant मतलब soil saline soils में भी आराम से grow कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कई जगह पे आपको पालक दिखेगा, पालक मतलब जनरली देसी ही कंट्री जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, देसी पालक जैसे स्पिनैच, स्पिनैच हम वर्ड उसके लिए यूज करते हैं जो एक्चुअली हाइब्रिड वाला है। देसी पालक के लीव्स विल नॉट फाइंड लाइक दिस, ऐसे नहीं रहते हैं उसके लीव्स। आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। इस तरह से नहीं रहते हैं उसके, इस तरह से रहते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं देसी पालक। एंड इसके लिए सलाइन सॉइल्स में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, बट इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट क्योंकि इसका जो सेल्यूलोज कंटेंट है ना बहुत हाई रहता है। बिकॉज ऑफ दैट सेल्यूलोज कंटेंट ओनली दे आर एबल टू टॉलरेट दैट हाई सैलिनिटी ऑल्सो, दैट प्रोटेक्ट्स देम। बिकॉज ऑफ दिस जो जिनके डाइजेशन प्रॉब्लम है दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस।
ओके, यस, लीफी वेजिटेबल जनरली भी सबके लिए डाइजेस्ट नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस सेमी सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज ओनली. Classification of crops as per the difficulty level of transplantation. These are easy to transplant, medium difficulty, difficult to transplant. मतलब वहीं पे करना बेटर है, मतलब डायरेक्ट सोइंग. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्लांटिंग सिस्टम ऑफ हॉर्टिकल्चर. यस, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? ये थोड़ा सा है, टॉपिक वैसा है, थोड़ा बोरिंग टाइप का. आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपगेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. यस, सो प्लांटिंग सिस्टम्स, स्क्वायर ज्योमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लांट ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर, हेक्सागोनल, क्विनकंस, कॉन्टूर, ये क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्री, इट मींस जब सीड सो करते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू ग्रो प्रॉपरली. ओके, सो दैट विदाउट व्हाट यू विल से, उसका जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है दैट इट कैन अचीव, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इट्स प्लांट ज्योमेट्री. मतलब उतना स्पेसिंग होना चाहिए उसका. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स, एज यू कैन सी हियर, दिस इज स्क्वायर मेथड. एज यू कैन सी हियर, इंटरक्रॉप, इंटर रो डिस्टेंस एंड इंट्रा रो डिस्टेंस इसमें सेम रहते हैं. इंट्रा रो डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटर रो डिस्टेंस. Okay, in this method, inter-row distance is not equal to intra-row distance. Okay, and the third method आता है हमारा triangular method. Okay, as you can see here, this is how they are planned. One row में जो plant करते हैं उसके exactly opposite, मतलब इन दोनों के बीच में ये आएगा हमारा दूसरा, like this. Okay, but इसमें क्या है, the major problem here is intercultural operations. Intercultural operations में थोड़ी सी problem हो सकती है. Next आता है hexagonal method, मतलब two equilateral triangles टाइप का. देखिए equilateral triangle टाइप का रहता है, and if you draw, एक हमें hexagonal structure आता है ये. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड बीच में एक. सो जनरली इसको क्या बोलते हैं, मैं लिखी तो थी सेप्ट्यूल, सेप्टल याद आ रहा था मुझे, सेप्ट्यूल भी बोलते हैं, बिकॉज 6 trees form the hexagon and 7th tree would be in the center. Hence this system is also called as septule system, and this accommodates 15% more trees when compared to the square system. ठीक है. When we talk about triangular system, each tree occupies more area, as you can see here. Hence इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 ही प्लांट्स मिल रहे हैं उतने ही एरिया में. सो हियर द नंबर ऑफ ट्रीज, प्लांट पॉपुलेशन वुड बी लेस व्हेन कंपेयर टू द स्क्वायर मेथड. ओके, एंड नेक्स्ट आता है क्विनकंस. क्विनकंस में क्या है, इट इज सेम एज स्क्वायर, बट वी विल ग्रो अ फिलर ट्री इन ईच सेंटर ऑफ द ईच स्क्वायर. नाउ जनरली जैसे अब यहाँ पे मैंगो लगा है, किसी फार्मर ने ऑर्चर्ड रेज किया है एंड ही हैज कम अप विथ मैंगो प्लांटेशन. ठीक है. नाउ मैंगो प्लांटेशन इट विल टेक सम 4 or 5 years फॉर द इनकम. सो लेकिन फार्मर को अगर जल्दी इनकम चाहिए, एंड ऑल्सो बाय द टाइम दीज ट्रीज ग्रो एंड कंप्लीटली कवर दिस कंप्लीट एरिया विद दैट कैनोपी, this area would be open, okay, for at least 1 or 2 years. During that time period, the farmer can go for some other crop like papaya, you know, kinno, falsa, etc. एक फसल लेके he can remove the fillers. This trees जो and those have been planted, these are called as fillers, and this system is called as quincunx. इससे क्या है, फार्मर का जो इनकम है दैट कंपेंसेट हो जाता है. दूसरा, द प्लेस विच इज ऐसे ही खाली पड़ा है फॉर द फर्स्ट 2 to 3 years, बाय द टाइम दीज ट्रीज ग्रो, तब तक फार्मर के लिए कुछ इनकम मिल जाता है. एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ बाय दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट डबल्ड देन द स्क्वायर सिस्टम बिकॉज ऑफ दीज फिलर्स.
Okay, and this can be followed only when the distance between the permanent trees, ये permanent trees है, okay, and the fillers are always temporary. एंड इन दोनों के बीच में अगर 10 meters का डिस्टेंस है, ओनली देन द फार्मर कैन गो फॉर फिलर ट्री, सो दैट ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे फॉर दे वोंट compete फॉर न्यूट्रिशन और फॉर एनी रिसोर्सेस वाइल देयर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है कॉन्टूर सिस्टम। ना कॉन्टूर्स वी ऑलरेडी नो, हमने व्हेन वी डिड सॉइल्स उसमें हमने देखा था कॉन्टूर सिस्टम किस तरह से होता है, हाउ वी विल प्लांट बेस्ड ऑन द कॉन्टूर लाइंस एक्सेट्रा। सेम हियर, used on hilly areas where plants are grown along the contours, suitable for uneven land where erosion risk is high and irrigation is difficult, okay, but here जो स्लोप का परसेंटेज होता है ना, टिल 10% स्लोप ओनली यू कैन गो फॉर कॉन्टोर सिस्टम। अगर स्लोप 10% से ज्यादा है देन यू हैव टू गो फॉर टेरेस सिस्टम, especially for horticulture crops we are talking about. Now contour system helps reduce soil erosion and conserve moisture, making slopes suitable for fruit and plantation crops. This we have already done, one of the best system जहाँ पे soil and water conservation simultaneously होता है, ठीक है। contour lines are designed to slow water flow, allowing it to soak into the soil without causing erosion. ओके, नाउ इसमें सिंगल हेड सिस्टम और डबल हेड सिस्टम दोनों तरह होते हैं। व्हाट इज सिंगल हेड सिस्टम, मतलब एक कॉन्टूर लाइन में सिंगल रो ऑफ ट्रीज वुड बी सोन। वही डबल एज में मतलब यहाँ 2 rows ऑफ ट्रीज वुड बी सोन, ओके। So T is planted along contours using single or double hedge system. Double hedge system accommodates about 22% more plants than the single hedge system, and this is one of the most commonly followed planting system on hilly terrains, that is under contour system in southern parts of India. ये बहुत common है double hedge system, ठीक है। Now, as I've said earlier also, 10% slope तक we can go for contour system for horticulture crops. लेकिन 10% से ज़्यादा हुआ तो then they have to go for terrace system. Here it involves planting on flat strips of land created across the slope. Terrace system हमने बिल्कुल पूरा देखा है किस तरह से terraces form के cut and fill method से, on that they will be growing the crops. Terraced fields form step-like structures preventing soil erosion and increasing usable land. Because we are cutting and filling, thereby more land is being brought under cultivation. The width of terraces depends on the slope. Steeper slopes have narrow terraces. That's obvious. जितना स्लोप स्टीप रहेगा उतना नैरो हमारे टेरेसेस होंगे, जितना स्लोप कम रहेगा उतना ब्रॉड टेरेसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नाउ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे, प्लांटिंग सिस्टम क्रॉप है ये, ओके, दिस इज द प्लांटिंग डिस्टेंस इन मीटर्स, ओके। नाउ नंबर ऑफ कितने ट्रीज हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं पर हेक्टर, देख जैसे कि मैंगो है 10 by 10 मीटर्स इसका प्लांटिंग डिस्टेंस है, वही स्क्वायर सिस्टम में 100 प्लांट्स हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, हेक्सागोनल सिस्टम में 115 एंड ट्रायंगुलर में 89. So highest number of plants you can accommodate in hexagonal system because एक एक्स्ट्रा आता है। सपोर्टा 8 by 8 डिस्टेंस, स्क्वायर सिस्टम में 156 एकोमोडेट कर सकते हैं, हेक्सागोनल यहाँ पे ये ज्यादा है, यहाँ पे हेक्सागोनल में ये कम है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ट्रायंगुलर में ये 139, अगेंस्ट क्लोव 6 by 6 277 320 and 248, 5 by 5 of acid limes 400 461 357, कोकोनट 7 by 5 7 by 5 177 205 159। ये फिर भी मुझे डाउट है, ये फिगर कुछ डाउट आ रहा है, आई चेक, क्योंकि जनरली हेक्सागोनल में ही सबसे ज्यादा आता है। ये मैंने एक लिटरेचर से ही लिया था टेबल, तो मैंने इतना देखा नहीं था। दिस लीव इट फॉर सपोर्ट, आई चेक इट अगेन कि फिगर वहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं आया है। ये फटाफट फटाफट एंटर कर रहे थे ना, कहीं गड़बड़ हुआ होगा मेरे से ही, बट अदरवाइज जनरली हेक्सागोनल का ही हाई रहता है। ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको मैंने ये दिया है, ठीक है। नाउ ये अभी हमने देखा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री। एक और प्लांटिंग सिस्टम है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड दैट इज high density planting system. Now here planting the fruit trees closer than the recommended spacing using special techniques so that more number of plants can be accommodated
in less space, and that too without sacrificing the quality of the produce. कई बार हम बोलते हैं ना, अगर हम लोग spacing maintain नहीं करेंगे तो there will be competition among themselves for nutrition etc, and that will impact the quality of the produce, right? But here they will see to that कि productivity maximum होगा per unit area but without sacrificing the quality, because they will be taking all that care. क्या क्या है, we'll look into that. It was first introduced for apples in Europe in 1960. Currently, it is being widely used in apple orchards in Europe, America, Australia, and New Zealand. India में especially ये banana plantations में बहुत use हो रहा है, ठीक है? Now there are various types of planting densities. ये apple high density planting का दिया है because majorly एप्पल में ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. लो हाई डेंसिटी प्लांटिंग लेस देन 250 ट्रीज पर हेक्टेयर, मॉडरेट 250 to 500, हाई 500 to 1250, अल्ट्रा हाई more than 1250, super high density up to 20,000 trees per hectare. Meadow orchards extremely high density where 70,000 trees per hectare. Okay, now what are the advantages of this high density planting? Early fruiting and long term higher yields. It has been observed that apple yield increased from 5 tons per hectare to 14 tons per hectare because the kind of what you will say varieties that are used, plus the fertilization that is being provided, and timely training and pruning of the crops that needs to be done in order to achieve these advantages of maximizing productivity from that less area without compromising on the quality. Then they'll be able to do this, getting higher returns. It will reduce the labor cost, okay, and improved fruit quality as well. Now what are the characteristic features of this high density planting trees? किस तरह से features है इसके? तो maximum number of fruiting branches, minimum structural branches. Training and pruning इस तरह से करते हैं कि they'll have maximum number of fruiting branches. ठीक है? ट्रेनिंग एग्जैक्टली क्या है, कितने तरह का है, प्रूनिंग क्या है, कितने तरह का है, दैट विल बी डूइंग इन द कमिंग चैप्टर्स. ट्रेनिंग स्पेशली गिविंग एक स्ट्रक्चर देना होता है. इट्स अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्ट्रक्चर टू द प्लांट. जैसे वो ग्रो हो रहा है, वी आर गिविंग स्ट्रक्चर बाय कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ट्री. देयर बाय इट विल बी एबल टू बेयर फ्रूट्स सही तरीके से बेयर करने के लिए. वही प्रूनिंग जो अनवांटेड अनडिजायर्ड ब्रांचेस वो सब हटा के, सो दैट जो भी फोटोसिंथेसिस हो के दैट इज गोइंग फॉर दिस फ्रूट प्रोडक्शन वो कंप्लीटली उसी के लिए यूटिलाइज हो, रादर देन यूटिलाइजिंग इट फॉर द अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस एक्सेट्रा. ठीक है, बेसिक ये है. और हम लोग देखेंगे central leader with nearly horizontal fruiting branches. When we talk about training, there are 3 types of training. Okay, central leader वो है कि rather than canopy ऐसे spread करने के जगह they will train it such a way that it will grow long, thereby taking less space. Canopy less space लेता है. थोड़ा सा मुश्किल होता है when it comes to harvesting, but otherwise this is good. This can be used in high density planting. Branches arranged to minimize shading of other branches. As I've said, उसमें central leader में ही ये possible है. Tree height should be 1.5 times its base diameter. जितना भी base diameter of the tree है, okay, उससे उसका height 1.5 meters रखते हैं, not more than 1.5 times, sorry. Okay. Proper tree size control is essential for HDP सक्सेस. दैट इज हाई डेंसिटी प्लांटिंग अगर सक्सेस करना है तो जो ट्री का साइज है उसे बहुत ही सही रखना पड़ेगा. एंड हाउ इज इट पॉसिबल? बाय प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस कंडक्ट करना पड़ता है. नाउ हाउ डू दे कंट्रोल द मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग ट्री साइज? क्योंकि हमने बोला है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉपर ट्री साइज कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर HDP excess. So what do the farmers do for maintaining that? First, use of size controlling root stocks. The plants varieties itself, they use such root stocks which have central leader के लिए बिल्कुल तैयार है and compact and all that. Use of spur type scions, that is spur type scions में क्या है, ज्यादा fruiting वाला growth होती है rather than vegetative growth. ये जब ट्रेनिंग करते हैं ना, देर training and pruning is done
especially leaving the vegetative growth, they focus more on the fruiting spurs. Okay. Training and pruning method, techniques like spindle bush, dwarf pyramid and cordon systems help control the growth. ये सारे different types of training and pruning methods है जो हम लोग next देखेंगे. Mechanical and chemical control, growth regulators are used which reduce the shoot growth by 30 to 50% without hampering the reproductive growth, like daminozid, ethifon, chlormequat, paclobutrazole. When we study about phytohormones का एक अलग सा class है exclusive. In that we'll study how the phytohormones are used for this. Mechanical methods, using spreaders or tying branches to a 45-degree angle to limit their growth. ऐसे कुछ कई सारी चीजें वो उनको करना पड़ता है so that जो maximum benefits है of this high density planting they can acquire. Planting systems for HDP, single row planting, close spacing करते हैं within the row but wider space between the rows, that is इंट्रा रो डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, इंटर रो डिस्टेंस ज्यादा रखते हैं. मतलब ये एक रो है, ये रो है, ये इंटर रो डिस्टेंस जो प्लांट के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम रहता है, ये ज्यादा रहता है, सो दैट जो न्यूट्रिशन है वो सब सही से उनको मिल सके. डबल रो प्लांटिंग मतलब टू रोज में ऐसे ये स्पेस रहेगा, ये बहुत नजदीक रहेंगे टू रोज. 3 रो प्लांटिंग 1 2 3 1 2 3, ये बीच में स्पेस ज्यादा रहेगा, इनके स्पेस इसके बीच में बहुत कम रहेगा. और मेडो ऑर्चर्ड स्टाइल, हियर 10 to 15 closely planted rows. Okay, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to 15. ओके ऐसे करके बीच में 2.5 मीटर्स का एले देके मतलब लेन देके अगेन अनदर 10 to 15 rows. सिमिलर टू दैट इसको क्या बोलते हैं, हमने किया था ना, मुझे अभी सडनली टर्म याद नहीं आ रहा है. ये हमने किया है 10 to 15 रोज ग्रोन एंड इंटरक्रॉपिंग करते हैं जनरली, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग. इसके बीच में सडनली नाम ही याद नहीं आ रहा, बट अदरवाइज दिस इज कॉल्ड एज मेडो ऑर्चर्ड सिस्टम. ठीक है, दीज आर द प्लांटिंग सिस्टम्स फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन. एज आई सेड मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन इन हॉर्टिकल्चर प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स, सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन, असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन. सेक्सुअल मेथड मतलब जो सीड्स के थ्रू जनरेट होते हैं. सो हियर दीज प्लांट्स आर रेज्ड थ्रू सीड्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सीडलिंग प्लांट्स. लाइक कोकोनट या पपाया, उनके पास अदर देन सीड्स देयर आर नो अदर मेथड्स ऑफ प्रोपगेशन. Okay, so this is heterozygous in nature because male gametes, female gametes, they are coming to form the seed. So इसके qualities अलग होते, so heterozygous. Not true to type to the mother plants because दोनों के पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आएंगे इसमें. यूजुअली प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी. दे हैव लॉन्ग जुवेनाइल फेज, 6 to 10 years उसके बाद ही प्रोडक्शन स्टार्ट होती है. नॉर्मली टॉल एंड स्प्रेडिंग टाइप. Seed propagation only possible way to propagate plants like coconut, papaya, etc. Asexual means of propagation not practicable. Asexual मतलब vegetative propagation like root cutting, stem cutting, budding, grafting, layering, बहुत सारे हैं. Hybrids can only be developed by sexual means. Very very important. यही question पूछा गया था in one of the competitive examinations associated with agriculture. जो hybrids हम लोग बोलते हैं ना, that can be developed only through sexual propagation. Seed is a source of production of root stocks. ये root stocks हम लोग use करते हैं asexual method of propagation. So उसके लिए जो root stock चाहिए, that would be the seed only. Viability of seed is an issue, one of the major problem here. Okay, उसका viability. Next आता है asexual reproduction or the vegetative reproduction. Here there is no involvement of male and female reproductive parts. यहाँ कुछ है ही नहीं. Vegetative parts, it can be its stem, it can be its root, it can be its leaf, anything can be used for this propagation. This is also referred to as vegetative propagation. It's homogeneous in nature because उसी के cells use करके next generation develop कर रहे हैं. So बिल्कुल true to type of their mother plants. True to type to the mother plant. They have short juvenile phase, bear flowers and fruits in early age. They have shorter lifespan, no diversity because यहाँ पे heterozygous in nature, but यहाँ पे homogeneous.
इसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं होगा। द बेनिफिट्स ऑफ रूट स्टॉक्स एंड सायन कैन बी एक्सप्लॉइटेड थ्रू दिस एसेशियल प्रोपगेशन। जैसे कि कोई प्लांट है, उसका बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है ना, वी वांट टू, एक और प्लांट है जिसका हेल्थ विगर वो बहुत ही अच्छा, लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा नहीं है, सो दिस यू कैन ग्राफ्ट ऑन टू द अदर वन, दैट इज ए से बी तक। सो उसमें द रूट स्टॉक, दैट इज जो जिसमें प्रोडक्शन नहीं है उसको रूट स्टॉक की तरह यूज कर सकते हैं। एंड द सायन इज द पार्ट ऑफ द अदर प्लांट विच हैज गुड प्रोडक्शन दैट वी आर गेटिंग एंड ग्राफ्टिंग ऑन टू दिस रूट स्टॉक। रूट स्टॉक हमेशा वही होता है जिससे सिर्फ नरिशमेंट मिलता है, उससे कुछ, it will not carry any traits of itself onto the progeny, but scion के जो जितने भी positive traits है that would be carried into the progeny। okay, वो क्या है और हम लोग आगे देखेंगे। this is suitable for plants where seed setting does not happen or they have rudimentary seeds like your potato, ginger, banana, pineapple etc। अभी banana में भी ट्रू पोटैटो सीड्स करके कुछ आ रहे हैं, दे आर यूजिंग दैट फॉर प्रोपगेशन। उससे ये पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो इतना भारी होता है, इतने द सीड मटेरियल ले जाना एंड ऑल दैट, सीड्स तो बिल्कुल मुट्ठी भर ले जाके पूरा 1 हेक्टेयर भर में आप कर सकते हैं। वो हम लोग जब प्रोपगेशन ऑफ पोटैटो करेंगे उसमें मैं हाईलाइट करूंगी, ठीक है। यस, तो यहाँ हम लोग क्लोज कर रहे हैं, विल डू द एमसीक्यूज, बाकी टुमारो विल लुक इनटू द वेरियस। ये सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन का है, ये असेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है, लाइक कटिंग्स। कटिंग्स में अगेन लीफ कटिंग्स, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग किस तरह से होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ओके, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग है। लेयरिंग, अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयरिंग। ओके, प्रोपगेशन थ्रू मॉडिफाइड ऑर्गन्स, वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट आता है बडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बडिंग। ओके, किस तरह कितने तरफ के बडिंग है, ये टिश्यू कल्चर है, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं जिसको, ये सब हम लोग कल करेंगे, ठीक है, along with various other topics। now yes, I am expecting everyone to participate in this questions। yes, मैं ये थोड़ा हटा देती हूँ। yes, which branch of horticulture deals with the production and marketing of vegetables? ये कल हमने किया था, based on the yesterday's class these questions are। pomology, fruits; olericulture, vegetables; floriculture, flowers; viticulture, grapes। okay, here we are talking about olericulture। which branch of horticulture focuses on the study, selection, planting, care and removal of individual trees, shrubs, vines and other perennial woody plants? others, what happened, why are you not participating? as I've said, गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कीप पार्टिसिपेटिंग, ये आपके लिए ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। yes, we are talking about arboriculture here। which of the following is an example of beverage crop under plantation crops? हमने plantation crops में different देखा, masticatory, that is chewing, oil yielding, beverage, rubber, that is industrial, कई सारे हैं। okay, so of that here we are talking about, yes, coffee। okay, yes, which of the following statements best differentiates plantation crops from fruit crops in terms of their characteristics and use? हमने ये differences भी देखा था। We talked about what exactly are plantation crops, what exactly are fruit crops, how they differ from each other on various characteristic features and uses। yes, ये तो बिल्कुल उल्टा है। plantation crops actually grown in tropical conditions and they are consumed only after processing, while fruit crops are grown in all kinds of regions and fresh। so ये गलत है। plantation crops require more training and pruning, have higher perishability। no, completely opposite। plantation crops are grown in tropical regions between 20 degrees north and 20 degrees south, having high export potential and are used diversely in medicines and beverages, while fruit crops are mostly consumed fresh and are rich in vitamins। yes, these are called as protection crops। okay, so here C is the answer। yes, which of the following best defines a spice in culinary terms? yes, which of the following, please be very careful while answering,
सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए. बेस्ट डिफाइंस अ स्पाइस. यस. एक्चुअली बे लीफ, यस इट्स ए लीफ, बट वो अकेला, आई मीन इट डजंट फ्लेवर. ओके, सो वी जनरली एक्सक्लूड दैट फ्रॉम द स्पाइसेस पार्ट. ओके, वो भी हम हर्ब की तरह ही ट्रीट करते हैं. यस, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. मुझे भी पहली बार डाउट हुआ था व्हेन आई फर्स्ट डन इन माय कॉलेज टाइम्स. So it is any dried part of a plant excluding leaves used for seasoning and flavoring. Okay, it is B. Next, which of the following spices is derived from the dried flower buds of a plant? ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन पार्ट आपको दे के पूछ सकते हैं कि कौन सा वो स्पाइस है. मैंने बहुत कई सारे एग्जांपल्स आपको दिए थे, प्लीज वो सही से देख लीजिए. सिनेमन क्या है? बार्क. cardamom, the pod, the entire capsule, allspice, and cloves क्या है? Your flower, dried flower buds. Okay, yes, see here. Which of the following statements accurately distinguishes between condiments and spices based on their usage, preparation, and market significance? इतना लंबा क्वेश्चंस पूछते नहीं है, but this is majorly for your revision purpose. Here we are talking about option C. Okay, condiments are used as a dining table to enhance side की तरह enhance the dish, involve preparation before using and have a significant market in specialty foods. After cheese in इसी का बहुत बड़ा market है. While spices unprepared ingredient है that is used in the flavoring. Which characteristic best distinguishes tropical zone crops from temperate and subtropical zone crops? Which characteristic feature best distinguishes tropical zone crops from temperate and subtropical zone crops? जो features है वो आपको याद रखना पड़ेगा. Yes, tropical zone crops. One second. Grown in cooler climates? No. Require frost? Not at all. बिल्कुल limited to dry regions? No. Actually, dry plus high humidity. High humidity. That is the best characteristic feature here. Okay. Which type of plant is ontogenically biennial but commercially grown as an annual? Yes. स्वीट पोटैटो, पोटैटो, कैबेज, बीटरूट, ये सारे वैसे ही हैं. ओके, सो हियर इट इज कैबेज. Arunachal Pradesh falls under which fruit growing zones as per the classification of fruit growing zones in India? Yes. Here it is a temperate zone and northeastern subtropical zone. Now, which of the following statements best describes the climacteric fruits?
Here it is, they continue to ripen after harvesting as well because of the ethylene production. Which of the following is an example of a non-climacteric fruit? Grape, apple, banana, mango, they all release ethylene even after harvesting. But इसका respiration rate बहुत slow रहता है because of which ये इसका जो स्पॉइलेज है ना वो कम रहता है. वही ग्रेप, इट इज नॉन क्लाइमेक्टेरिक, एक बार हमने हार्वेस्ट कर दिया है, इट वोंट राइप. ओके. Yes. Which fruit has a shelf life of 6 to 12 weeks based on the shelf life जो हमने किया था? ये क्वेश्चन कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन देयर शेल्फ लाइफ. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंज में फिर यहाँ पे ये टेबल भी डाल दिया है. देखिए, नॉन पेरिशेबल, लेस देन ग्रेटर देन 12 वीक्स, ये सारे एग्जाम्पल है. सेमी पेरिशेबल, जो ये सेमी पेरिशेबल वाला देखा हमने, पेरिशेबल एंड वेरी पेरिशेबल, एक बार फिर से देख लीजिएगा. What is the effect of a 10 degrees rise in temperature on the respiration rate of harvested fruits and vegetables? इसीलिए जो हार्वेस्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को है ना, उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, प्री कूलिंग ट्रीटमेंट, इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग, सो दैट उनका जो टेम्परेचर है उनको डाउन करने के लिए. बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन, ऑब्वियसली द रेस्पिरेशन ऑल्सो गोज डाउन, देयर बाय इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ. जो प्रिजर्वेशन वाला है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स करेंगे. प्री कूलिंग के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. Yes, here the respiration rate doubles or triples. Okay. Yes. Which fruit has a respiration rate that releases 20 to 40 milligrams of carbon dioxide? Higher the respiration, higher lower the shelf life. Okay, इसके basis पे हमने एक table भी बनाया है based on the amount of carbon dioxide they release. Okay, during respiration. किए थे. स्नैप मेलन तो उससे ज्यादा, सबसे हाईएस्ट उसी में आता है. Okay, it is strawberry. Let's have a look at the table again. देखिए, very high snap melon, high strawberry avocado 20 to 40, like medium, low, very low, सबका है यहाँ पे. ठीक है. Which part of the coconut fruit is rich in cytokine hormone useful for plant tissue culture? ये ऑप्शंस को मुझे और थोड़ा टफ बनाना था, ये बहुत इजी हो गया. यहाँ पे ये बिल्कुल ये कुछ भी नहीं देंगे आपको. ओके, तो मैंने तो यहाँ दे दिया है. They won't give you anything, so you have to memorize based on this only. Yes, what happened? It is liquid endosperm, highly nutritious. Okay, yes. In a mango fruit, which of the following parts is edible and juicy? ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है इन कोकोनट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज एडिबल. वहां पे एंडोस्पर्म, एंड यहाँ पे दे द mesocarp is fibrous. Okay, but here the mesocarp is edible and juicy. ओ, यहाँ पे आंसर दिख रहा है. विच पार्ट ऑफ द एप्पल फ्रूट इज एडिबल? यहाँ पे आंसर दिख रहा है. आई एम सॉरी. यस, इट इज थैलामस, और इसी को रिसेप्टिकल भी बोलते हैं. ओके, और इसी को हाइपेंथियम भी बोलते हैं. एंड बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द ओवरी इन दिस, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी करके बोलते हैं. ठीक है. यस. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ हेस्पेरिडियम? इट्स अ काइंड ऑफ बेरी ओनली. तो एक थोड़ा सा तो मैंने दे दिया आपको हिंट. आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप बाय 7:15 सो दैट आपको 7:30 वाले क्लास के लिए बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए आपको.
Yes, hesperidium में it's a fleshy fruit with a leathery exocarp containing oil glands like oranges and lemons. 1 second, क्या हो गया? Okay. Yes. Which of the following characteristics define a balusta type fruit? किसको balusta बोलते हैं? Yes, here in this, epicarp is rough and leathery, the mesocarp is papery and thin, and the endocarp forms chambers enclosing the seeds irregularly. उसका भी aril ही है. The edible part is that aril. Here also edible part in pomegranate. Okay. Yes, this is all from my end. Thank you very much. Yes. Now the forum is open for your queries, questions, any comments on today's session, any suggestion that you want to add. I'm stopping the sharing. Yes. अगर कुछ क्वेरीज नहीं है तो आई वाइंड अप. आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में आपका दूसरा क्लास है. थोड़ा सा फिर ओ थैंक यू. मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है टीचिंग. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट सो दैट आपको द बेस्ट कंटेंट मिले, द बेस्ट फॉर्म, सो दैट आपको बिल्कुल दिमाग में छप जाए, प्रिंट हो जाए. Okay, thank you very much. No queries. Great. So we'll be leaving. Again, as I always say, please take very good care of yourself. Take care. Bye bye. Good night.